हेलो एवरीवन। ताले आज आम ओस्टेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी गोटे भिडियो 2016 रु 2021 सेकेंड पर्यंत आम पांचटा सेट्र सबू पेडा माने आमर 250टा पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आउ 250टा क्वेश्चन भितर निश्चित आपण किछिटा क्वेश्चन पाइबे नले एई टाइप्र किछिटा क्वेश्चन निश्चित आसब। तेणु समस्त भिडियोटी को फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत भल भाव देखूँ। जदि किसी भी डाउट हम कहार कमेंट मध्य रिप्लाई करें तेल ठीक अच्छे। आज आम स्टार्ट करवा। मुझे फर्स्ट पेडागोजी सेक्शन को जीवा। तेले एटा हमला जूलॉजी हाँ। तो आमको आम आसी पहुँची गले कौटी पेडागोजी पार्ट रे। ताले फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करदबा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज लिस्ट। ताले कोटारे मेंटल ऑपरेशन लिस्ट बा कम होता है। ताले मेंटल ऑपरेशन टा इमिटेशन रे कम होता है। इमिटेशन होची अनुकरण करिबा फॉलो करिबा। आमे जतबे काहाकू अनुकरण करंती सेतबे हमर मेंटल ऑपरेशन टा बा मेंटल फंक्शन हमर बेसी हेई न थाए। तापर क्वेश्चन व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विथ अनडिजायरेबल इमोशन ऑफ द एडोलेसेंट्स। ताले एडोलेसेंट मानकर अनडिजायरेबल इमोशन को डील करिया पई कोटा बेस्ट वे हैला। ताले एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे एटा नो पनिशिंग द एडोलेसेंट पनिशिंग द एडोलेसेंट एटा तो टोटली नो। आमे तांको जदी एडवाइस करबा कि नॉट टू बिहेव इन दैट वे ताले मे बी से माने हम एडवाइस टा को हैंडल करि पारंती नि। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन थ्रू रे आम एडोलेसेंट मानकर अनडिजायरेबल इमोशन को हैंडल करि परिबा। तापर क्वेश्चन हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ताले मन रखिथिबो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंस रो ग्रुप फैक्टर थ्योरी के देथिले थॉर्नस्टोन देथिले ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ। ताले लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्टिव इंटेलेक्चुअल सहित एसोसिएटेड किंतु कॉग्निटिव डोमेन सहित कॉग्निटिव डोमेन माने हमर जोटा साइकोमोटर डोमेन बा हमर जोटी मोटर माने एक्टिविटीज इंक्लूड करे ता सहित एसोसिएटेड नुह। Who the doing aspect of behavior is associated with। doing aspect माने आम टिके देखले doing माने कौन आम किसी करंती माने साइकोमोटर जोटा कि कोटा सहित एसोसिएटेड ना कॉग्निटिव डोमेन कॉग्निटिव डोमेन। ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट। ताले क्रिएटिव लर्नर टा कोउदिरे गुड होता है लैटरल थिंकिंग रे से गुड। Which of the following affect the development of self concept of the adolescent। adolescent मानकर self concept को कोटा affect करे। ताले एठी जदि आमे पूर्वरु देखिथिले appearance माने तांकर affect करूथिले आउ कोन affect करे फेल्युअर टा मध्ये affect करे। According to Guilford, any intellectual activity of the human being can be described in terms of 3 component। ताले गुलफोर्ड को अनुसार 3टा कंपोनेंट रे आमे ताको करि परिबा कोन कोन ना ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट। Who propounded the 2 factor theory of intelligence। ताले इंटेलिजेंस रो ग्रुप फैक्टर थ्योरी देइचंती के थॉर्नस्टोन एंड 2 फैक्टर थ्योरी देइचंती स्पीयरमैन हैला। ताले आउ इंटेलिजेंस रो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देइचंती के गार्डनर। द सेल्फ कॉन्सेप्ट माने कोन व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। आमे हम निज विषय जहाँ भावंती सेटा होची सेल्फ कॉन्सेप्ट। Which of the following cannot be considered as a characteristic of learning। learning रो कोटा characteristic नुह। it takes place only in a formal institution। ताले learning कौन केवल formal institution में हुए learning हमर informal non formal सबू सेटअप रे हेई परिबो। ताले ए फर्स्ट learning रो गोटे characteristic नुह। तापर जिबा नेक्स्ट पेज को A candidate is working hard to qualify the Ossstet। The candidate is said to have been motivated। ताले से Ossstet पाई कौन हार्ड लेबर करूचे ताले से होची कौन भितर मोटिवेशन आसुची तार इंट्रिंसिक मोटिवेशन बा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड।
When previous learning makes no difference at all to the performance of the learner, it is called जेतेबेले previous learning रो किछि गोटे इफेक्ट थाए बा पॉजिटिव इफेक्ट थाए ताको हमें कहते पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देन जदि नेगेटिव इफेक्ट थाए बा तार भल इफेक्ट न थाए सेटा को नेगेटिव ट्रांसफर आ जदि किछि इफेक्ट न थाए सेटा होछि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. Which of the following pair is not correct? कोटा करेक्ट नुह. पाब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ठीक अच्छी. थ्रॉन्डाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ठीक अच्छी. कोहलर देते इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी ठीक अच्छी. वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भूल अच्छी. वाटसन देते बिहेवियरिस्ट थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के देते स्किनर देते बीएफ स्किनर. The critical pedagogy aims at critical pedagogy कम एम रखे ना टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन जो गोटे बैंकिंग सिस्टम रही ताठारू से दूर है सेटा को से इराडिकेट करने एम रखे. तापरे रिपीटेशन स्ट्रेंथन द कनेक्शन बिटवीन एस एंड आर माने स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स व्हाट लॉ ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन. ताले हमर रिपीटेशन माने हम बारंबार रिपीट करबा माने कोन बारंबार प्रैक्टिस करबा हैला प्रैक्टिस. हु इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी. क्रिटिकल पेडागोजी रे के मोर एक्टिव. क्रिटिकल पेडागोजी रे लर्नर टा मोर एक्टिव. हु इज द क्रिटिकल पेडागोजिक एजुकेटर. क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर किए मन ये रखता. क्रिटिकल पेडागोजी फाउंडर होउछंदी पाउल फेरे एंड क्रिटिकल पेडागोजी एजुकेटर ए भितर किए हेबे इरा सोर. द यूज ऑफ टीएलएम इज नॉट एसोसिएटेड विथ द टीएलएम रो यूजटा कहा सहित एसोसिएटेड नुह. टू मेक टीचिंग लर्निंग प्लेजरेबल ठीक अच्छे. टू कवर द कोर्स कंटेंट इन टाइम एटा टीएलएम रो गोटे माने यूज सहित एसोसिएटेड नुह. ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज. ताले लर्नर गोटे स्पेशल नीड्स सहित लर्नरटा कौन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अफेक्टिव बिहेवियर, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर. ताले ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. Which of the following is not a component of educational management? Educational management रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुह. देखो कोटा कंपोनेंट नुह ना एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन. ताले एजुकेशनल मैनेजमेंट कोटा करे प्लान करे एडमिनिस्ट्रेट करे एंड सुपरवाइज करे. एजुकेशनल गाइडेंस तार गोटे माने कंपोनेंट नुह. द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी. स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन केमती होबा कथा डेमोक्रेटिक. व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट. कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इम्पोजिशन. कोटा गोटे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो कंपोनेंट नुह. इम्पोजिशन टा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे कंपोनेंट नुह. Which one is not associated with the role of a teacher? Facilitator, philosopher, friend, administrator. ताले कोटा टीचर रो रोल सहित एसोसिएटेड नुह पचारि. ताले देखो टीचर आमर एटा गला गोटे आमर कोन टीचिंग साइड आ गोटे हला एडमिनिस्ट्रेशन साइड. ताले एडमिनिस्ट्रेटर टा एसोसिएटेड नुह. Which one is considered as the core of schooling for holistic development? Syllabus, curriculum, syllabi, courses of studies, textbook. ताले देखो syllabus, courses of studies, textbook सब किछि कहा अंडर आसीबो curriculum. ताले curriculum टा होछि core. Difficulty, value and discriminating power of the test items are determined at the stage of. ताले एटा कोटा difficult अछि बा हमरो कोटा हमरो माने गोटे टेस्ट आइटमटा को आम किपरि अच्छी देखापी प्लानिंग स्टेज रे नुह, प्रिपेरेसन नुह, ट्राई आउट स्टेज रे आम जापर. कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट. ताले एटा कौन मेन रखे होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक डेवलपमेंट आम ओवरऑल सब किछि आसीबो. What type of grading system has been introduced by BSc Odisha for HSC examination?
ताले को भला ग्रेडिंग सिस्टम देख रिलेटिव नुह जिते बड़े आम गोटे को गोटे सहित कंपेयर करके करती सेटा रिलेटिव एटा की प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम है। तापरे व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट रे कौन न थाए रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्ट लेवल देख क्वेश्चन को वेटेज थाए कंटेंट को वेटेज थाए टाइप ऑफ क्वेश्चन को माने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को भी वेटेज थाए किंतु डिफिकल्ट लेवल विषय से न थाए। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओस्टेट ओस्टेट होची कौन गोटे एंट्रांस एग्जामिनेशन कहाँ अंडर आसीबो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अंडर। At what stage of development a child usually appears at the HSC examination को एज HSC आमर केबे हुए 14-15 वर्ष जड़े दिए 14-15 वर्ष माने कौन आमर से एडोलेसेंस पीरियड कहीं चाइल्डहुड आमर जदि फास्ट देखा इनफान्सी गला इनफान्सी पर आसला एर्ली चाइल्डहुड पर लेटर चाइल्डहुड तापर लेटर चाइल्डहुड बेलू लेट चाइल्डहुड बेलू जन को 7 ରୁ 10 वर्ष होतापर आसीज एडोलेसेंस जोटा कि आमर 10 कि 12 वर्ष रु चलो केते जे 20 वर्ष पर्यंत। तापरे 4 distinct stages of child in intellectual development are identified by ताले intellectual development cognitive development जे भी जहाँ क्वेश्चन पचारते एटा किए कहते पियाजेट देते कौन थिला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज concrete operational stage formal operational stage। which of the following indicate the development of a child development को कोटा indicate करे increase in height एटा होचे हमर growth increase in weight growth increase in size of limb growth increase in function कहीं ना आम पढ़ी डेवलपमेंट होची फंक्शनल ग्रोथ होची स्ट्रक्चरल तेणु आमर जोटा कि जोटे साइज बढ़ुची यहाँ हूँ ग्रोथ अंडर आसो जदि आम ओभराली कहवा ब्रडर सेन्स रे कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट अंडर आसो किंतु डेवलपमेंट कोटा को बुझे जो से फंक्शनाली गोटे जिनसर ग्रोथ होची। At what stage of development the child is egocentric को स्टेज रे थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे बा जेते बेले गोटे चाइल्ड केते जेते गोटे चाइल्ड को आम ऑपरेशन सेंसरी मोटर कहते केते 2 ରୁ 0 to 2 years 2 to 7 years होची प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गोटे चाइल्ड थाए इगोसेंट्रिक से अलग मानकर ओपिनियन को व्यू को एक्सेप्ट करेनी सेते बेले ता भितरे इरिवर्सेबल थॉट थाए से गोटे जिनस भाबे जदि पूर्व स्टेज को माने पळेछि माने से आ फेरीबनी ये सब थॉट तार केबे थाए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे। Which of the following is a negative emotion एटा इजी क्वेश्चन जेलसी होची गोटे नेगेटिव इमोशन। तापर क्वेश्चन which statement is not correct कोटा करेक्ट नुहे डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ठीक अच्छे डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट एटा भूल अच्छी डेवलपमेंट केतेबेले हमर फर्स्ट हो पारे केतेबेले स्लो हो पारे सब पार्ट रो मध्य डेवलपमेंट एरो रेटा डिफरेंट तेणु ऑप्शन बी। तापर क्वेश्चन which of the following is the best for growth of infant ताले कोटा milk and other nutritive diet है ना। तापर क्वेश्चन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्रीनेटाल जिते गोटे मदर वोम रे गोटे कंसेप्शन पीरियड रु तार डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए थाए। तापरे व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप विथ व्हिच ए चाइल्ड बिकम्स इन कांटेक्ट विथ ताले चाइल्ड फर्स्ट कहार कांटेक्ट आसे फर्स्ट आसे फैमिली पर नेबर देन स्कूल देन कम्युनिटी। व्हिच वन इज नॉट ए सोशल नीड ऑफ द एडोलेसेंट ताले एडोलेसेंट मानकर कोटा गोटे सोशल नीड नुह स्टेटस इंडिपेंडेंस अचीवमेंट अफेक्शन ताले कोटा सोशल नीड न थाए देखो तांकर स्टेटस अचीव इंडिपेंडेंस अफेक्शन ये सब गुड़ा गोटे सोशल नीड किंतु अचीवमेंट तांकर गोटे सोशल नीड नुह। Pedagogy is the science of teaching. Who propounded the instrumental conditioning theory of learning? ताले classical conditioning theory देइथले कि Pavlov and instrumental बा operant conditioning theory देइछंती B.A. Skinner। ताले पावलोव गला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर ले इंस्ट्रूमेंटल बा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एरिक्सन कौन देइछंती साइकोसोशियल थ्योरी तापरे कोलबर्ग कौन देइछंती कोलबर्ग देइछंती मोरल डेवलपमेंट थ्योरी।
According to humanistic approach of learning, the human needs are arranged in a hierarchical order. What need is placed at the top? ताले hierarchical need किए देइथिले अब्राहम मास्लो तो hierarchy देइथिले सबुठारु फर्स्ट कौन थिला फिजियोलॉजिकल नीड पर कौन आसुथिला लव एंड बिलोंग सेफ्टी नीड पर आसुथिला लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड तापर आसुथिला सेल्फ एस्टीम पर आसुथिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो टॉप रे थिला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोएस्ट रे थिला फिजियोलॉजिकल नीड बा बेसिक नीड द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर रेफर्स टू ताले जोटा हमरो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जोटा प्रोपाउंड करछन्ती कि रोगर ताकू कोन कुहा जाय ताकू कोन से रेफर्स टू प्रोग्राम सेंटर्ड सॉरी गोटे मिनट एटा हमरो जोटा रोगर करथिले प्रोग्राम सेंटर नै लर्नर सेंटर मन रखथिबो रोगर जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम माने देइछन्ती सेटा ऊपर हमरो कहा सेंटर लर्नर सेंटर when any condition unit is ready to conduct for it to do is satisfying this statement refers to which love ready achi mane kon readiness which of the following is not teacher centered learning by doing explaining discussing demonstrating कोटा teacher centered learning नुह learning by doing एटा teacher centered नुह What is the function of motivation in teaching learning process? It identifies the objective, it identifies the method, it reinforces the learner behavior, it identifies the learner weakness. ताले एटा कौन करे learner रो behavior को reinforce करे The inductive approach to formation of concept according to Brunner comprises of 4 steps such as analysis, presentation of example, testing, generalization. ताले से कहला कोटा correct order. ताले फर्स्ट कौन हम प्रेजेंटेशन गोटे एग्जांपल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल देन एनालिसिस पर टेस्टिंग पर जनरलाइजेशन से टेस्टिंग पर जनरलाइज पर आमे ताकू टेस्ट करवा ताले फर्स्ट होची प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल देन प्रेजेंटेशन एग्जांपल पर एनालिसिस पर जनरलाइजेशन पर टेस्टिंग accordingly Brunner है Constructivism as a theory of learning focuses on the role of the learner in imitation, the role of the learner in memorization, the role of the learner in imagination, the role of the learner in creating new knowledge out of own experience. ताले Constructivism कौन कहे construction of knowledge based on experience. ताले option D होची right answer. सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू भाइगोट्स्की ताले सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म भाइगोट्स्की अनुसार कौन थिला एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर ताले एटा ठीक अछि एक्वायरिंग न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड कोऑपरेशन विथ अदर्स ताले एटी फास्ट हमर सरी गला 2016 रो एबे हमें जिबा 2018 को 2018 19 देन 21 रो दुईटा ताले एबे हमें देखिबा 2018 रो क्वेश्चन ले स्टार्ट करिबा 2018 रो ताले व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड एट द लास्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इन ए पीरियड ताले इन ए पीरियड देछि ताले देखो इन ए पीरियड जदि हमें गोटे होल ईयर को देखिबा ताले ईयर एंड रे हमर टर्म एग्जाम बा समेटिव एग्जाम हुई आ जदि पर्टिकुलर गोटे पीरियड गोटे क्लास कथा देखिबा ताले फॉर्मेटिव यार आंसर रे उभय सी और डी थिला तापर क्वेश्चन which one is not a tool of observation anecdotal record achievement test rating scale checklist ताले कोटा गोटे observation tool नुहे achievement test गोटे observation tool नुहे in which the child is not active teacher's classroom demonstration homework home text done given by the teacher practicing the exercise of the textbook extensive study of the textbook and workbook tale teacher's classroom demonstration ne child ta active na thai what type of motivation is the status of the individual tale individual motivation ko kon kha jaye intrinsic motivation Blueprint is used in preparation of the question paper because different types of question find their places. ताले कोई different question को हमारा सब weightage मिल जाए तो इतने blueprint use है
तापर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कोटा रिलेटेड नुह टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर एटा रिलेट करूची टीचर टीचर्स थ्रू क्वेश्चन आंसर मेथड एटा रिलेट करू नाही टीचर केवल क्वेश्चन आंसर मेथड रे पढ़ांतीनी चाइल्ड को इथि निजर किछि करिया पई स्कोप मिले According to Guilford's intelligence model, which is not included in the mental process, evaluation, synthesis, divergent thinking, convergent thinking. ताले गुल्फर्ड करो जो इंटेलिजेंस मॉडल अछि ता भितरे कोटा इंक्लूड नाही ताले सिंथेसिस इंक्लूड नाही तापरे नेक्स्ट देखिबा in a motivational learning situation the learner ताले गोटे motivational learners in situation है learner interested to ask question become interested to ask question से curious हुए किछि question पचरिया पई ता भितरे ताको motivation मिले when did multilingual education starts in our state माने ओडिसा रे multilingual education केबे स्टार्ट हेतला 2007 रो 8 बेलको स्टार्ट हेतला who defined social development means the attaining of maturity in social setting तले या डेफिनेशन के देथिले हरलॉक देथिले सोशल डेवलपमेंट होची कोन मैच्योरिटी सोशल सेटिंग रे हमें अचीव करिया को कह जाय डेफिनेशन देथिले हरलॉक at what stage the child enters the peak of ganges तले ganges को केतले एंट्री करे 11 ରୁ 12 इयर्स तले 11 ରୁ 12 वर्ष बेलको से ganges रे जाय तापर क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म तले वाटसन होचंती बिहेवियरिज्म रो फंक्शनलिज्म रो विलियम जेम्स who viewed that growth refers to structural and physiological changes development is concerned with growth as a whole and those changes in the result of environment situation एटा किए देथिले ना एटा कहितले क्रो एंड क्रो which is more important in development physical change in nerve system maturation tale all of the above from which stage does the development of the child begins prenatal postnatal infancy childhood tale development kebe arambho हुए prenatal ru at what stage a child begin to think logically se kebe भाबिया को आरंभ करे प्रथमे formal operational stage ru नले concrete operational stage ru तार logical thinking develop करे ठीक अछि ताले हम एठी formal operational लिख परिबा transmission of generic characters from parents to offspring এটা কোন কয় যে বংশগতি বা heredity तापरे which of the following statement is not correct कोटा ठीक नो both growth and development is quantitative qualitative এটা ভুল আছে কেন growth qualitative quantitative নো the development proceed in the direction of longitudinal axis ताले head to toe सेटा को कोन कह जे cephalocaudal tendency of development आ जदी center to lateral होतबो सेटा को कह जे proxidecimal which of the following cognitive constructivism does not depend on tale experience of the child constructivism does not depend on inquisitiveness of the child environment of the child concept of the child tale which of the following cognitive constructivism does not depend upon tale eta kon hobo na experience of the child hobo নহলে environment of the child dita janko mara hi paribo तापरे which is not correct development is a lifelong process ठीक अछि development always takes place uniformly एटा भूल अछि development सब बेले uniformly हुए नाही which of the following is not a continuous process motivation learning development growth ताले growth development ଆଉ learning ताले एठी motivation and learn growth ए दिटा continuous न तो a को d भितरु जोटा भी मारले ठीक हबो काहेकि ना आंसर शीट जदी देखिबे सेठी मध्ये a / d लेखा है
Which one of the following is not related to child-centered teaching and learning? Emphasis on learning experience, emphasis on holistic development, emphasis on self-learning, emphasis on classroom teaching. তাহলে কোটা উপরে দিয়া যায়নি, classroom teaching উপরে দিয়া যায়নি. Which learning is not dependent on motor skill? Drawing, singing, cycling, typewriting. তাহলে ସବୁଥିରେ ଦେଖ drawing ରେ, typewriting ରେ and cycling ରେ ଆମର motor skill include ହଉଛି କିନ୍ତୁ singing ରେ ନୁହଁ. Which factor influences development? Both heredity and environment. ତାପରେ which one is not an example of extrinsic motivation? Praise, prize, recognition, interest. তাহলে interest টা হଉଛି কোন? Intrinsic motivation. Which type of evaluation should be done to know if a child is fit for admission into class B triple I? তাহলে এটা হচ্ছে কোন? ଗୋଟେ entrance হবা. Entrance মানে কোন? এটা placement evaluation. Which language should the teacher use while teaching scheduled tribe students so as to meet their language problem? তাহলে book language and spoken language of the area. A blueprint consists of 3 dimensions that are কোন weightage to learning, objective, weightage to form of question, তারপরে weightage to content. Weightage to content, weightage to learning objective, weightage to teaching aids. তাহলে দেখো teaching aids ଆମର ଆସେନି blueprint ରେ. ତାহଲେ option A ଟା ଠିକ ଅଛି. Which is not a recognition type test? Sentence completion, true false, matching, multiple choice. ତାହେଲେ କୋଉଟା recognition type test ନୁହଁ? ତାହେଲେ recognition type test କୋଉଟା ନୁହଁ ଦେଖ, true false recognition type, matching ମଧ୍ୟ, multiple choice ମଧ୍ୟ. ତାହେଲେ sentence completion ଟା ନୁହଁ. What is called pedagogy? Pedagogy is the science of teaching. Which quality is not found in a good test? Good test ର କଣ quality ଥାଏ? Validity, reliability, usability. Flexibility good test ର characteristic ନୁହଁ. Which is not related with the objective of motives? To energize the behavior, to stabilize the behavior, to stimulate the behavior, to activate the behavior. କୋଉଟା relate କରୁନି objective motives ର? ତାହେଲେ to stabilize the behavior ସେଟା relate କରୁନି. Which of the following is both qualitative and quantitative? कोटा both qualitative और quantitative. Evaluation टा both qualitative and quantitative. ତାହେଲେ study, experimentation, evaluation, observation ଅଛି. ତେଣୁ evaluation କଣ? both qualitative, quantitative. ତାପରେ in what type of questions the possibility of guessing is list? Completion type, yes no type question, 4 option type, answering a single sentence. ତାହେଲେ କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ guess କରିବାଟା ବହୁତ କମ ହୁଏ, 4 option type ରେ. Which method of evaluation is effective for assessment of both curricular co-curricular? তাহলে formative, comprehensive, aptitude, diagnostic. ତାହେଲେ comprehensive assessment ଦରକାର କୋଉଥିପାଇଁ? curricular and co-curricular assessment ପାଇଁ. Which one is teacher centered teaching learning process? Teacher works as a facilitator of learning. Teacher centered ରେ teacher explains with the help of teaching learning material. Teacher supervises the learning activities. Learning activity, teacher helps learner to gather experience. ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ क्वेश्चन ର आंसर ଆମର आंसर सीट ରେ A ନଲେ B ଦେଇଛି. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ର, ସେଠି टीचर फैसिलिटेटर नथांती, टीचर लीडर थांती. टीचर फैसिलिटेटर कोठी थांती? टीचर चाइल्ड सेंटर्ड रे फैसिलिटेटर भाबरे काम करନ୍ତି.
And এটা আমি teacher supervise the learning activities, teacher help the learner to gather experience. তাহলে এটা ଆମର Dটা ପୁରା child centered. Cটা ମଧ୍ୟ teacher explains with the help of teaching learning material. ତାହେଲେ Bଟା ହିଁ ଆମର ହଉଛି teacher centered ର ଗୋଟେ. Conventional level of moral development viewed by Kohlberg comes under, তাহলে conventional ଟା ଆସୁଛି Kohlberg କଣ ଦେଇଥିଲେ pre conventional, conventional, post conventional. ତାହେଲେ conventional ଟା ଆସୁଛି stage 3, stage 4. Intelligence is the general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to a new situation. এটা କିଏ କହିଥିଲେ? এটা Stern କହିଥିଲେ. Who was the propounder of group factors or anarchic theory of intelligence? ତାହେଲେ group factor theory ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ. ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଏ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ନେଇକି. ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଥର୍ନଷ୍ଟୋନ. ଏଠି ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଥିଲେ? ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି. ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଥର୍ନଷ୍ଟୋନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି. ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ. ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 2016 ରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ 18 ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି. Alfred Binet belongs to which country? Alfred Binet ଯେ କୋଉଥିର ନା Alfred Binet ଫ୍ରାନ୍ସ ର. ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ. Name the first psychologist who designed the mental age. Alfred Binet ଯିଏ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ. ସିଏ ପ୍ରଥମେ mental age define କରିଥିଲେ. What does the intelligence quotient of a child signify? Intelligent quotient ମାନେ କଣ? Mental age by chronological age into 100. ତାପରେ adolescence is a period of stress and strain, storm and strike. Which educationally suggested this statement? ତାହେଲେ କିଏ କହିଥିଲେ? ହିଲ୍ କହିଥିଲେ. ହିଲ୍ ମନେ ରଖିଥିବ. Social change during adolescence include, କଣ include କରେ? Adult like behavior, imagination, restlessness, fear and shame. ତାହେଲେ adolescence ରେ କଣ କରେ ସିଏ? Adult like behavior show କରେ. Who defined learning to be change in behavior as a result of experience? এটা Cronbach କହିଛନ୍ତି. The desire of self-fulfillment to realize one's own potentialities comes under, এটা ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସିବ? Self actualization. Hello, এটা କିଏ ଦେଇଥିଲେ? Abraham Maslow ଦେଇଥିଲେ. Teachers notes and smiles come under. Smile କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ? Positive reinforcement. And non-verbal କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେ just ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି, କଥା କହୁନାହାନ୍ତି. କଥା ନହେଇକି ଆମେ ଠାରା ଠୁରେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ସେଟା ସବୁ non-verbal. The process of establishing a new fact from a given fact. ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ fact କୁ establish କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର given fact କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? Analog. If a test gives the same result whenever it is repeated, it is called, ଏଟାକୁ reliable ବା reliability କୁହାଯାଏ. ଯଦି ସେ ମାନେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପଚାରିଥିବ କଣ କଣ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ରିଲାବିଲିଟି, ୟୁଜାବିଲିଟି. ତାହେଲେ ଏଇଠି ସରିଗଲା 2018 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ଏବେ ଯିବା ଆମେ 2019 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ. ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କରିବା ସଲ୍ଭ 2019 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ. ଏମିତି କରିକି ଆମେ କ୍ୱିକଲି ସବୁ ସେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦବା. ତାହେଲେ which of the following is not a guiding principle of NCF 2005? NCF 2005 ର କୋଉଟା ଗୋଟେ guiding principle ନୁହଁ. ତାହେଲେ connecting learners to outside the world, ଏଟା ଠିକ ଅଛି. Ensuring the learning shifted from rote method, ଠିକ ଅଛି. Making examination more flexible and interacting than the classroom life, ଠିକ ଅଛି. ତାହେଲେ students need to appear in examination regularly, ଏଇଟା NCF 2005 ର ଗୋଟେ guiding principle ନୁହଁ. The result of measurement are always expressed in, always ତାହେଲେ measurement ର result କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୋଉଥିରେ express କରନ୍ତି? Number ରେ.
for the assessment of learning and behavioral performance at the hands of the peer. Which of the following tools may prove quite beneficial? ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ କୋଉଟା beneficial ହୁଏ? Observation questionnaire ଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ beneficial. Process and tax of measurement and evaluation in the field of education is governed by which of the following principle? ତାହେଲେ କୋଉଟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ totality and comprehensiveness, principle of selecting appropriate tools of measurement and evaluation. Option D all of the above. ତାହେଲେ all of the above କାହିଁକି ନା continuous ଯିବ, comprehensiveness ଯିବ and selecting tools କୁ ନବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯିବ. The main objective of diagnostic test. Diagnostic test ର main objective କଣ? To find out the nature and cause of the learning problem. The learning problem ର କଣ nature ରହିଛି and cause ସେଟା ବାହାର କରିବା and to formulate a plan for seeing remedial action. ଆଉ ଗୋଟେ plan form କରିବା. An example of commonly employed qualitative assessment tool. ତାହେଲେ ଗୋଟେ commonly employed qualitative assessment tool କୋଉଟା? Intelligent test, creative test, achievement test, observation. ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ intelligent test ହଉ creative test ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବାନି. achievement test କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ସବୁବେଳେ କରିପାରିବା? observation. ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ commonly use ହୁଏ. ତାପରେ which of the following is characteristic of a good test? ତାହେଲେ A, B, C ତିନିଟା ହଉଛି କଣ test construction step କିନ୍ତୁ validity ହଉଛି ତାର characteristic. Day and night are caused by dash motion of the earth. এটা କୋଉ type ର question? এটা ହଉଛି କଣ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର completion type ହେଲା. Which state is the largest producer of copper in India? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? এটা କୋଉ type ର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମର understanding ଦରକାର ନାହିଁ. ଏଇଟା ଗୋଟେ knowledge based question ହେଲା. True false ତ ନୁହଁ, completion type ବି ନୁହଁ. ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ simple recall type. ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଅଛି. ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା knowledge based then knowledge based choose କରିଥାନ୍ତ. A test is said to be valid if it measures what it ought to measure. जोटा तार measure କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ଯଦି ସେ ସେଟା measure କରିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ test ଟା valid. MHRD was created in the year. MHRD ହେଇଥିଲା କେତେ 1985 ରେ. ଏମିତି factual question ପଡିବ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ. Which of the following is not a leadership skill? High power hackering skill. Power hackering skill ଟା ଗୋଟେ leadership skill ନୁହଁ. Which of the following is not a function of educational management personnel? ତାହେଲେ educational management personnel ର କୋଉଟା ଗୋଟେ function ନୁହଁ. ତାହେଲେ mobilizing and allocating resources, designing and developing reform measures, forming educational objective and policy, taking decision, consulting the parents. ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ function ନୁହଁ. One important function of NCERT. NCERT ର ଗୋଟେ important function କଣ? one important function. ଦେଖ important function ହଉଛି to disseminate improved educational techniques and practice in school. University Grant Commission was formally established by Government of India by an Act of Parliament in the year 1956. The author of the book Frames of Mind ହେଇଥିଲା 1983 ରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ Frames of Mind ଲେଖିଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନରଙ୍କର Frames of Mind. The important development tax for different phases in lifespan have been given by development ର କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ? ପିଆଜେ development stage ଦେଇଥିଲେ ନା. Full form of SMDC, School Management and Development Committee. ତାପରେ girls as a group tend to be happier than boys. ତାହେଲେ girls ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେବେଳେ ଅଧିକ happier ଥାନ୍ତି ବା happy ଥାନ୍ତି? ସେଟା childhood ରେ.
गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रेन मानक आम आउ कौन कहि परिबा टैलेंटेड मध्य कहि परिबा Development means a progressive series of changes that occur as a result of maturation and experience. Who said this? किए कहिसंती चल एटा कहिसंती हर्लक तापरे देखो which of the following statement is true about development कोटा true अछि development is caused both by heredity and environment the one word which best characterizes adolescence in change the change is physiological sociological and psychological who said this eta Jean Piaget कहिसंती hero or thief is very prominent in which stage of human development ताले जने hero type रो केतेले चाहे सबले देखिबो केतेबेले टा adolescence रे which of the following is not a need of adolescence need for a good pen adolescence good pen चाहेनी which of the following is an advantage of rubrics rubrics as a tool of assessment may be well used as both self evaluation device or external evaluation device ताले rubrics टा self evaluation device भाबरे यूज हुए and external evaluation device भाबरे मध्ये यूज हुए co-curricular activities are also called known as co-curricular activities को आउ कोन कहा जाय other curricular activities तापर इवैल्यूएशन देखो आगे हमरो फर्स्ट आसिला मेजरमेंट रो आउ टिके ब्रॉडर सेंस रा देखले असेसमेंट देन आसुची इवैल्यूएशन ताले इवैल्यूएशन इज मोर कम्प्रेहेंसिव देन मेजरमेंट CC stand for continuous and comprehensive evaluation one recent trend in evaluation in school education ताले बे recent trend जानिथिबो कोन बे मार्किंग सिस्टम टू ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा हिचे which of the following is the step of test construction ताले validity टा कोन reliability validity एटा अछि तार कोन characteristic planning होची गोटे step